Today is our last day in Banaras, and today we are going on this Ganga boat ride. We are very highly excited about it. We would like to see the ghats from the other side, Yeah. right? So hold on. Now we are beginning our boat ride. That is the Brahma Ghat. That's where I'm staying actually. And now we will be seeing all the ghats. So now we have begun from the Brahma Ghat. Actually, I walked this distance 2 days back. Today I'm traveling by the boat in the holy Ganges. So now we have started our journey by the boat. I walked all this distance 2 days back, but now I'm going by the boat. This is the Ganges. मस्जिद है। पहले बिंदु माधव का मंदिर था ये। हाँ। औरंगजेब का राज हुआ, मस्जिद बना दिया, उससे ठीक सामने बिंदु माधव मंदिर है। अच्छा। एक आपके काशी मठ में है, हाँ। एक यहाँ बिंदु माधव मंदिर है। और ये जो बालाजी घाट लिखा हुआ है सर ना, हाँ। इसके अंदर बालाजी का मंदिर है। अच्छा। आप लोग बिस्मिल्लाह खान सनाई वादक का नाम सुने होंगे। हाँ हाँ। इधर बैठकर सनाई बजाते थे, उनको बालाजी भगवान को बहुत अच्छा लगा साउंड उनका, तो खुद ही आए थे उनको बिस्मिल्लाह खान को दर्शन देने के लिए। अच्छा। बिस्मिल्लाह खान से बालाजी भगवान को मिले। ये चार घाट राजा ग्वालियर स्टेट के राजे का वो महल है। ये राम घाट है, आज छोटा एक राम जानकी जी का मंदिर है सर। हाँ। ये देखिए मेहता घाट है। ये हमारे काशी का प्रथम हॉस्पिटल है। वो वाला? ये वाला, ये बड़ा वाला बिल्डिंग। जिस समय काशी में कोई हॉस्पिटल नहीं था, हाँ। तो ये पहला हॉस्पिटल खुला था, वल्लभ राम शालिग्राम मेहता हॉस्पिटल। ओके। जी। ये कौन सा मेहता घाट है ये? है ना? हाँ, ये मेहता घाट? मेहता घाट है। मेहता का मंदिर है। उसके बगल में सिंधिया, माधवराव सिंधिया का, जी, ग्वालियर वाले। This is the Sindhya Ghat and this is the Sankata Ghat. People are taking the holy dips out here. This is the leaning temple out on the Banaras Ghat due to a curse by a saint who was removed from where he was staying. Nandit, Manikarnika. ये मणिकर्णिका 824 So we are now जलता रहता है। Now we are coming to Manikarnika Ghat. मणिकर्णिका इसलिए नाम है, ऊपर एक कुंड है, मणिकर्णिका कुंड। उस कुंड में शंकर। So this is where we are at the Manikarnika Ghat. This is where the cremations take place. ये विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर Ah, मोदी जी यही बनाए हैं। okay. So this is the Kashi Vishwanath corridor initiated by our Prime Minister Narendra Modi. We went there last night and it is really beautiful. And here is the Kashi Pashupatinath Nepali Mandir. आएंगे तो उधर जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। This is the Man Mahal Ghat or Man Mandir Ghat. This is the palace of Raja Mansingh. And now we are at the ashwamedh Ghat.
ठीक है। Yeah, this is the same ghat ये where the दशाश्वमेध घाट है। Ganga Aarti is यहाँ conducted. दशरथ राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। मुंशी प्रेमचंद लेखक। Oh, this is the Munshi Ghat after the Munshi Premchand, the author. ये ड्रामा पैलेस है। ये दरभंगा घाट बिहार के राजे का एक महल था ये, लेकिन यहाँ लोकल मेंबर्स ने लेकर इसको होटल बना दिया पैलेस। 20,000 रुपये स्टार्टिंग रेट है इसका। बोट रेस था 3 दिन का, यहाँ फेस्टिवल था। योगी जी ने उद्घाटन किया था। पहले यहाँ के लोकल मेंबर्स। This is Raja Ghat. This is also a ghat by the Peshwas, established in 1807. यहाँ का देखिए ये लोकल हाउस बोट है। पति और पत्नी जोड़ा साथ में स्नान नहीं करता है। अगर स्नान करता है तो घर पर जाने के बाद झगड़ा होता है। नारद मुनि का काम है झगड़ा लगाना। This is the Narad Ghat. हाँ? हाँ जी। पूरा ठेका लेकर कर रहे This हैं। is the tent city in Banaras on the banks of river Ganga. बहुत रूम्स है फिर इनके पास। हाँ 500-600 रूम का। There must be at least 500 to 600 kings. Starts from 5,000 and goes up to 50,000 per ये night. देखिए केदार घाट। This is the Kedar Ghat. This is the Swayambhu Murti of Lord Shiva. Now we are approaching the Harishchandra Ghat. This is the another ghat where cremations take place after Manikarnika Ghat. This is the Harishchandra Ghat where Raja Harishchandra had to work when his Sadesati Shani was going on. This is the Karnataka Ghat, which was actually the palace of Mysore, Raja देखिए हनुमान घाट। Mysore. नागा साधु का जूना अखाड़ा है ये। So now we are headed back to Brahma Ghat. So now we are climbing the steps which goes to the corridor of Kashi Vishwanath temple. This is the corridor. There are steps again which lead us to the Kashi Vishwanath temple. In the sense, this is extension of the Kashi Vishwanath temple. There's a viewing gallery. This is the statue of Shankaracharya. See, you can see the way which goes towards Ganga, and you can also see the Ganges out here. It seemed Prime Minister Narendra Modi had a bath in the Ganga Ghat and used this route to go to the Kashi Vishwanath temple. This is the statue of Ahilyabai Holkar, who is actually the one who installed the Shivling out here at the Kashi Vishwanath temple. See, this is what you're seeing, the golden color
Rome is the temple, Kashi Vishwanath temple. Unfortunately, we could not show you yesterday, but today in the corridor you are allowed to take your cameras, and here it is.